दोस्तों, क्या आप घर बैठे पर्सनल लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं मोबाइल की सहायता से आसान प्रक्रिया में? तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। मेरे लिंक से आवेदन करें, कम समय में आसानी से लोन मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एम के कैपिटल्स एंड लोन। दोस्तों, अगर आपको पर्सनल लोन की जरूरत है तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस आसान भाषा में बताऊंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन या पिन किए गए कमेंट बॉक्स में दिए गए मेरे लिंक पर क्लिक करके आवेदन शुरू करें। आवेदन शुरू करने से पहले जान ले डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने ही चाहिए, या आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल कर देनी है, खासकर वो जो जिसमें स्टार लगा है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा, उसमें 6 नंबर के ओटीपी डालकर सबमिट करें तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। अब बाकी की डिटेल भर के नेक्स्ट पर क्लिक करें। Enter your net monthly income, address, and PIN code details. After filling in the required information, click on Submit. A confirmation pop-up will appear stating that your application has successfully passed the pre-approval check. You will then be redirected to the Bureau Report Consent page. After reading the details carefully, click on I agree to proceed. Next, the eligible loan amount will be displayed on your screen. Click on the Check Eligibility button to continue. A credit check consent form will appear. Review the information and click on I agree. The system may take up to 5 minutes to process your details. During this time, a screen will display that your details are being processed. Once completed, your final loan offer will be shown. Click on View Loan Details to see a complete breakdown, including loan amount, processing fees, and other applicable charges. After reviewing the details, click on Proceed. You will be redirected to the DigiLocker page. Enter your Aadhaar details, verify your date of birth, and set your security PIN. On the DigiLocker consent page, select all necessary documents and click on Allow. Your KYC details will be processed. Confirm your current address and click on Proceed. Allow location access when prompted. After granting location permission, you will be redirected to the complete bank details page. Enter the required information including bank name, account type, account number, and IFSC code. Once entered, click on Verify My Account. After successful verification, you will be redirected to the Digio page displaying your bank details. Choose your preferred verification mode. You will then be redirected to the document verification page. Review and verify all necessary details. Then submit the required information. Once completed, you will see the Mandate Accepted page. Click on the Click Here button to proceed to the Authentication Success page. The app will then redirect you to the bank account details page with a Check Status button. Click on Check Status to refresh the page. Once updated, the Proceed to Dispersal button will appear. Click on Proceed to Dispersal. An application under review page will appear along with a Sign Agreement button. Click on Sign Agreement. The loan agreement will be generated. Carefully review the details, provide the necessary information, and verify to accept the agreement. Once the agreement is successfully signed, your loan process is complete.